Hello friends. In previous lecture we discussed about economic transactions, non-economic transactions. Economic transactions are those transactions whose transaction can be measured in terms of money. In economic transaction there is an exchange of product and service between two or more persons, and mainly there are three types of economic transactions: cash transaction, credit transaction, and a special transactions. Non-economic transactions are those transactions whose measurement cannot be terms in money. तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर आप एक्सचेंज करते हो गुड्स और सर्विस का, और जिसकी वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मेजर कर सकते हो, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस है। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऐसे है जिसके अंदर वो ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ मनी के अंदर मेजर नहीं कर सकते और उसके अंदर कोई भी एक्सचेंज भी नहीं हो रहा। दैट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इन अवर लेक्चर here we have to identify that transactions are economic or non-economic. So here very important. So chapter 2, describe whether transactions are economic or non-economic. Assets purchased for 10,000. So here asset purchase. So whenever you purchase any asset, there is an exchange between business and supplier. So the value of asset purchase means exchange is made here, and value of assets can be measured in terms of money. तो जब आप asset purchase exchange होगा, आपने asset purchase की, उसको आपने कैश किया होगा. So this is called economic transactions. Why economic transactions? Because the assets of value measured in terms of money 10,000. Assets purchased from Vivo for 10,000 on credit. Now same example, but in previous transaction a name of person is not given. Here asset purchased from Vivo for 10,000 on credit. So here again we purchase asset, and value of asset is also measured in terms of money. So this is also called economic transactions. And this purchase on credit transactions are also economic transactions. And here we purchase from Vivo. So Vivo is become creditors for us, and we are debtors for Vivo. So this is also called economic transactions. Assets sold for 20,000. So whenever we sold any assets, there is an exchange of asset and cash. And whenever you sold any asset, the value of asset is also measured in terms of money. और वहां पर exchange हुआ होगा. In this transaction, a person name is not given. And whenever any transaction person name is not given, that is called cash transactions. आपने asset sold की cash में की होगी, तो आपको cash मिला और आपने उसको asset दी है. So this is called economic transactions. Because value of assets is measured in terms of money. So this is called economic transactions. 8,000 paid for wages. So here the value of wages is also measured in terms of money. That is called economic. This is economic transactions. And paid word is given. So it suggests that there is a cash transaction
value of rent measured in terms of money. So your value of rent that is 9,000 and received, आपको रेंट मिला मतलब कैश आपके पास आई होगी. So value of rent can be measured in terms of money. So this is also called economic transactions. An order is received to supply goods for 10,000. Very important things. An order is received to supply goods 10,000. Some of the students think that the value 10,000 is given, so that is economic transactions. But look carefully. In this transaction, there is no exchange of goods and service, only order. An order is received. सिर्फ आपको ऑर्डर मिला है, अभी एक्सचेंज गुड्स और सर्विस की नहीं हुई. सो एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स. इफ यू सोल्ड गुड्स, अगर आपने गुड्स उसको बेचा होगा तो वो इकोनॉमिक हो जाएगा क्योंकि एक्सचेंज हो जाएगी. बट ओनली वी रिसीव्ड एन ऑर्डर, सो देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस. सो दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. So this is non-economic. Or planning is made to buy an assets. Here you purchase assets and value of assets measured in terms of money. And whenever you purchase any asset, there is an exchange of product. But here you are making only planning. सिर्फ आपने एसेट परचेज करने का प्लानिंग किया है, अभी तक आपने एसेट परचेज नहीं की. सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट. सो दिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. An order is given to Tithi bookstores for purchase of stationery. Only an order is given. सिर्फ आपने उसको ऑर्डर ही दिया है, अभी रियल में आपने स्टेशनरी परचेज नहीं की. सो देयर इज नो एक्सचेंज बिटवीन तिथि बुक स्टोर्स एंड बिजनेस. यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है. सो दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. Stationery purchased 1,000 from Divyaraj. Here we purchase a stationery. So when we purchase stationery from Divyaraj, so there is an exchange between business and Divyaraj. So, and also value of stationery can be measured in terms of money 1,000. और आपने परचेस किया तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. एंड इन दिस ट्रांजैक्शन अ पर्सन नेम इज गिवन. दिव्यराज, आपने दिव्यराज से क्रेडिट पे ली है बिकॉज इन दिस ट्रांजैक्शन अ पर्सन नेम इज गिवन. बट कैश एंड चेक वर्ड इज नॉट गिवन, सो इट सजेस्ट दैट दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. तो आपने दिव्यराज से क्रेडिट में परचेस की है तो दिव्यराज आपके लिए क्रेडिटर्स हुआ और आप उसके लिए डेटर्स हुए. सो वन रिलेशन एग्जिस्ट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. ₹1,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय चेक. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है. So whenever you receive any service from electricity from UGVCL, you must pay electricity bill. और आपने पे किया तो एक्सचेंज मनी का हुआ. आपने उसको चेक से पेमेंट किया तो उसको पैसा मिला, उसके लिए इनकम हो गई, आपके लिए एक्सपेंस हो गया. एंड 1,000 electricity bill is also measured in terms of money. So this is called economic transactions. So economic transactions are those transactions which can be measured in terms of money. There is an exchange of product
transactions are those transactions which cannot be measured in terms of money. वहां पर कोई एक्सचेंज नहीं हुआ और आप उसको मनी के अंदर मेजर नहीं कर सकते. ओके, नाउ in this information we have to identify that transactions are cash transactions or credit transactions. So cash transactions are those transactions whenever in any transactions at the time of purchase or sales immediately amount paid or received in cash or check. जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करो उसी टाइम अगर कैश या चेक से ट्रांसफर अमाउंट हो रहा है तो वो आपके लिए कैश ट्रांजेक्शन होगा. जैसे कैश में परचेज किया है तो इमीडिएटली आपको पेमेंट कैश या चेक से करना पड़ेगा, या आपने कोई सेल्स कैश में किया है तो इमीडिएटली आपको कैश से अमाउंट मिलेगा या चेक से अमाउंट मिलेगी. एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर दोज ट्रांजेक्शन at the time of transaction there is no exchange of cash or check, but this amount should be paid in future. आपने जब भी ट्रांजेक्शन किया तब आपको कोई कैश नहीं मिलने वाली, लेकिन आपको फ्यूचर के अंदर मिलेगा. दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. इन प्रीवियस लेक्चर I am giving you 3 tips about identifying cash transaction. When a clear word cash or check is mentioned in any transaction, a person name is not given in any transaction, paid, received, deposited word is given in transaction, you can identify this as cash transactions. While in credit transaction, 3 things. First things, there is a no word cash or check is given. A person name is mentioned in the transactions, and there is a relation existing of debtors and creditors. So look, we have to identify here. Describe whether the following transactions are cash or credit. Goods sold in cash for 500. So here the goods sold in cash. In this transaction, a clear word cash is given. Second thing, in this transaction, a person name is not given. So it suggests that this is a cash transaction. We have 2 reasons. First, cash already word is given, and second, also a person name is not given, so this is called cash transactions. Look sir, goods sold to Hansi for 1000. Here goods sold to Hansi. Did you find any word whenever you goods sold to Hansi? हैंसी ने आपको चेक दिया, आप कैसे कैसा करके लिखा है? In this transaction, cash or check is not given, but a person name is given. So whenever a person name is given, but cash or check word is not given, so this is called credit transactions. And there is a relation. आपने हैंसी को कुछ सोल्ड आउट किया, आपको उससे पैसा लेना है, सो हैंसी इज बिकम डेटर्स फॉर यू, और हैंसी के लिए आप क्रेडिटर्स हो जाओगे. गुड्स 10,000 परचेज फ्रॉम रूसी. गुड्स 10,000 परचेज फ्रॉम रूसी. In this transaction, a cash check word is not given, but a person named Rushi is given. So whenever a person name is given, cash and check word is not given. So this is called credit transactions.
से क्रेडिट में लिया है, तो जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे वो रसीद आपके लिए क्रेडिटर्स हो जाएगी और उसके लिए आप डेटर्स हो जाओगे। गुड्स 10,000 purchased from Aksar on cash. Now in this transaction a clear word given cash, and whenever clearly word cash or check is given, so very easy, this is cash transaction because cash word is here given, so this is called cash transactions. Goods 10,000 purchased. Goods 10,000 purchased. Now you have to identify that this is a cash transaction or credit transaction. First things, in this transaction a person name is given, not given. And whenever in any transaction a person name is not given, it clearly suggests that this is a cash transaction. कैश ट्रांजैक्शन में पर्सन का नेम का इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में डेटर्स क्रेडिटर्स का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता। सो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। कैसे आइडेंटिफाई किया? बिकॉज इन दिस ट्रांजैक्शन अ पर्सन नेम इज नॉट गिवन, एंड व्हेनेवर इन एनी ट्रांजैक्शन अ पर्सन नेम इज नॉट गिवन, दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। Salary paid 5,000. आपने सैलरी पे की, here clearly word is given pay. सैलरी क्रेडिट में तो आप पे नहीं कर सकते, आपने पे किया मतलब कैश goes out और चेक goes out. So this is called cash transactions. Insurance premium paid 1,000 by check. Two things. Paid word is given and check is also given. So when your cash or check word is given, it clearly suggests that this is a cash transactions. Goods of 2,000 received as a free sample. Very important things. Goods of 2,000 received as a free sample. Here when we receive any goods as a free, आपको मिला कि फ्री में मिला है। अगर आपको फ्री में मिला है, so that is called non-economic transactions, because this transaction cannot be measured in terms of money, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या है? फ्री। अगर आपने परचेस किया होता तो उसकी मेजरमेंट मनी के अंदर होती, बट व्हेनेवर यू रिसीव एनी गुड्स एज अ फ्री तो वो हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक। So this is called non-economic transactions. अगर ये मैं पेन परचेस करता हूं तो ये इकोनॉमिक है, अगर कैश में परचेस किया तो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में लिया तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर कोई स्टेशनरी वाले ने मेरे को ये फ्री में दिया एज अ सैंपल तो ये नॉन इकोनॉमिक होगा, क्योंकि ये फ्री हो गया एंड दिस ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Furniture of rupees 1,000 purchased from Ved Patel. Now in this transaction a person name is given Ved Patel and there is a no word cash or check is given. तो यहाँ पर कैश और चेक वर्ड नहीं है and a person name Ved Patel is clearly given. So this is called credit transactions. Now same thing but intelligent word. Furniture of 1,000 purchased. In previous transaction we also purchased furniture, here we also purchased furniture, but the difference, in previous transaction a person named Ved Patel is given. Now look these transactions, furniture of 1,000 purchased, but in this transaction a person name is not given. And whenever in any transaction a person name is not given, this is called cash transactions. Okay? Telephone bill 800 paid by check. Paid word is given, check word is given, so it clearly
पेड दिया है और चेक भी दिया, सो दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस। ट्यूशन फीस रिसीव्ड 5000 एंड हियर रिसीव्ड वर्ड इज गिवन, क्योंकि आप रिसीव्ड कब बोलोगे, जब आपको पैसा मिलेगा तब आप रिसीव्ड बोलोगे। सो आपको ट्यूशन फी मिली है मतलब आपकी इनकम हो गई, सो दिस इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस। Wages paid 500, so here paid is given, so cash transaction। Paid loan interest 300, अगर आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और पेड लोन का इंटरेस्ट आप कैश में ही पे कर सकते हो, क्रेडिट में तो पे नहीं कर सकते, so this is called cash transactions। Stationery purchase 1000 from Patel Stationery Mart, so stationery purchase 1000 from Patel Stationery Mart, a person named Patel Stationery Mart is given, जो शॉप है उसका नाम है, और यहाँ पर देखो कैश और चेक नहीं लिखा लेकिन a person name or a business name is given, so that is called क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि शॉप है उसका नेम दिया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज करूं, स्टेशनरी परचेज 1000 फ्रॉम पटेल स्टेशनरी मार्ट ऑन कैश, अगर मैंने इतना बड़ी ऐड कर दिया, स्टेशनरी परचेज 1000 फ्रॉम पटेल स्टेशनरी मार्ट ऑन कैश, अगर कैश वर्ड है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन सिर्फ इतना ही लिखा है, स्टेशनरी परचेज 1000 फ्रॉम पटेल स्टेशनरी मार्ट, सो शॉप नेम इज गिवन बट कैश एंड चेक वर्ड इज नॉट गिवन, सो दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो टुडे वी डिस्कस अ very important transaction for you, and I hope you will like this lecture. Thank you. Now today we discussed about dual effect. In double entry system, every transaction having two effect. So in previous lecture we discussed about economic, non-economic transactions. Then we discussed about cash transaction, credit transactions. Now our third stage. Now we have to identify dual effect. Then in our next lecture we will discuss about debit and credit. So third step, very important, please concentrate here. Which two effect would take place for following transactions? Transaction, now we have to give first effect and second effect. 10,000 goods purchased for cash. So 10,000 goods purchased for cash. Okay, whenever we goods purchase, look these two effect. There is purchase and cash. So whenever we purchase goods, so at that time goods comes in. Goods comes in, but you cannot give goods account effect. Here purchase word is given, so first effect is given to purchase account. So goods comes in, तो आप गुड्स अकाउंट इफेक्ट नहीं दे सकते, फर्स्ट इफेक्ट होगी परचेस अकाउंट इफेक्ट होगी, देन दिस गुड्स परचेज ऑन कैश, अगर आप कैश के अंदर परचेज करते हो कैश गोज आउट होगी, आपके पास से कैश जा रही है, सेकंड इफेक्ट कैश goes out, so second effect on which account? Cash account. So second effect on cash account. तो आपने गुड्स परचेज किया तो आपके पास गुड्स कम से, तो एक परचेज अकाउंट
and cash is goes out, cash आपके पास जा रही है. So second effect on cash account. So first effect on purchase account, second effect on cash account. Then 5,000 goods sold to Vivo. So 5,000 goods sold to Vivo. In this transaction, a person name is given Vivo. And whenever in any transaction a person name is given and cash and check is not mentioned in these transactions, so this is called credit transaction. ये credit transaction है क्योंकि इसमें विवो वर्ड लिखा, कैश और चेक मेंशन नहीं किया. ओके, whenever we goods sold to विवो, आपने गुड्स विवो को बेचा है, सो विवो इज बिकम रिसीवर क्योंकि उसने आपका गुड्स लिया. So Vivo is receiver. So first effect on Vivo account, तो एक effect Vivo account में होगी. Vivo account effect. So first effect on Vivo account. Now the second effect here, goods sold. Whenever we goods sold, it means goods goes out. जब आप माल बेचते हो आपके पास से goods जा रहा है. So goods goes out. लेकिन आप कभी भी goods account में इफेक्ट नहीं ले सकते. ये sold word is given. So second effect on sales account. So second effect on sales account. So goods sold to Vivo. So Vivo is receiver. So first effect given on Vivo account. Goods goes out. So second effect goes to sales account. Now 5,000 goods sold for cash. Now in this transaction, cash clearly mentioned. आपने goods बेचा लेकिन कैश में बेचा है. Okay, whenever we goods sold on cash, what comes in? Cash comes in. So cash comes in. So first effect on cash account. So first effect on cash account. Now this word sold. So whenever we goods sold, it means goods goes out. Goods goes out. लेकिन आप गुड्स अकाउंट में इफेक्ट नहीं ले सकते. सो सेकंड इफेक्ट ऑन सेल्स अकाउंट. सो व्हेनेवर वी गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट इफेक्ट एंड गुड्स गोज आउट. सो सेल्स अकाउंट इफेक्ट. सो टू इफेक्ट. देन 10,000 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वेद पटेल. So in this transaction, a person name is given Ved Patel and no cash or check word is given. So this is credit transaction. First goods purchased. So whenever we goods purchase, जब भी आप goods purchase करो तो आपके पास goods आएगा, goods comes in. So goods comes in. But you cannot give goods account. The purchase word is given. So first effect on. So first effect on purchase account. Now this goods purchased from Ved Patel, a person name is given. जब आप वेद पटेल से गुड्स परचेज करते हो तो आपको किसने गुड्स दिया? वेद पटेल ने आपको दिया ना. सो वेद पटेल इज बिकम गिवर क्योंकि उसने आपको गुड्स दिया. सो वेद पटेल इज गिवर. सो सेकंड इफेक्ट ऑन वेद पटेल अकाउंट. वेद पटेल अकाउंट इफेक्ट. So one effect on purchase account, second effect on Ved Patel account. 5,000 commission paid. Okay,
commission is our expense, and whenever you paid commission, what goes out? Cash goes out, because in this transaction a person name is not given, so this is cash transactions. So commission paid, so commission is expense, क्योंकि आपने कमीशन पे किया वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा. सो कमीशन अकाउंट इफेक्ट. सो फर्स्ट इफेक्ट ऑन कमीशन अकाउंट, एंड व्हेनेवर वी पेड कमीशन व्हाट गोes out? Cash goes out. Cash goes out. So cash account effect. So commission paid, first effect on commission account and second effect on cash account. 10,000 deposited in bank. आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया. So whenever you deposited any amount in bank, जब आप बैंक के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपका अमाउंट किसने रिसीव किया? बैंक ने किया. So bank is become receiver. Bank is receiver. So bank account effect. So first effect is given on bank account. Okay, whenever you deposited 10,000 in bank, what goes out? Cash goes out. So cash goes out. So cash account effect. So one is a bank account effect, second is a cash account effect. 5,000 withdraw from bank. आपने बैंक में से 5,000 विड्रॉ किए. ओके, व्हेनेवर वी विड्रॉ फ्रॉम बैंक व्हाट कम्स इन? जब आप बैंक से अमाउंट विड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश कम्स इन. सो कैश comes in. So first effect on cash account. So first effect on cash account. Okay. जब आप अमाउंट बैंक से विड्रॉ करते हो, आपको अमाउंट किसने दिया? बैंक ने दिया. तो बैंक इज बिकम गिवर, क्योंकि बैंक ने आपको अमाउंट दिया. जब आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो तो आपका अमाउंट बैंक ने लिया था, तो बैंक इज रिसीवर था. नाउ द ऑपोजिट, वी विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक. सो बैंक इज बिकम गिवर, क्योंकि बैंक ने आपको अमाउंट दिया. बैंक इज गिवर. सो सेकंड इफेक्ट ऑन बैंक अकाउंट. सो 5,000 विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट इफेक्ट. Second, bank account effect. Furniture purchase for 10,000. Furniture is our asset, and whenever we purchase furniture, what comes in? Furniture comes in. So, furniture comes in. So first effect on furniture account. So first effect on furniture account. Okay, in this transaction a person name is not given. Furniture purchase for 10,000, person name is not given. So whenever in any transaction a person name is not given, this is cash transactions. It means this furniture purchase on cash. So furniture comes in, but we paid cash, so cash goes out. Cash goes out. So cash account effect. So first effect on furniture account, second effect on cash account. Wages paid 100. आपने कोई लेबर है उसको wages पे किया. Okay, whenever we purchase wages, so for me here we paid wages. So wages is our expense. वो आपका expense हुआ, वो आपका खर्च हो गया. So
wages is expense. So first effect on wages account. So first effect on wages account. Enter the word paid. आपने वेजेस पे किया, जब आप लेबर का वेजेस पे करो व्हाट गोज आउट, कैश देना पड़ेगा, सो कैश गोज आउट, कैश गोज आउट, सो कैश अकाउंट इफेक्ट. सो वेजेस पेड, सो वन इफेक्ट ऑन वेजेस अकाउंट, second effect on cash account. Now the last, salary paid by check. आपने सैलरी चेक से पे की, सो सैलरी पेड. तो जब आप सैलरी एम्प्लॉय को पे करोगे तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा. सो द सैलरी इज एक्सपेंस. सो first effect on salary account, and this salary is not paid by cash, this salary is paid by check. जब किसी को आप चेक से पेमेंट करते हो तो उसको पेमेंट आप नहीं करते, आपकी जगह पेमेंट कौन करेगा? बैंक. तो बैंक उसको एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगी, तो बैंक इज बिकम गिवर, क्योंकि बैंक उसको पेमेंट करेगी. सो बैंक is giver. So second effect on bank account. So salary paid by check, salary is expense. So first effect on salary account and second effect on bank account. So in these transactions, here we have to give dual effect. 10,000 goods purchased on cash. So goods purchased, so goods comes in. So first effect on purchase account and cash goes out. So second effect on cash account. 5,000 goods sold to Vivo. So Vivo is a receiver. So Vivo account effect. And goods sold, which means goods goes out. So goods goes out. Second effect on sales account. 5,000 goods sold for cash. Whenever we goods sold on cash, cash comes in. So first effect on cash account and goods sold means goods goes out. Second effect on sales account. 10,000 goods purchased from Ved Patel. Goods purchased, so goods comes in. So first effect on purchase account and Ved Patel is giver. So second effect on Ved Patel account. 5,000 commission paid. Whenever we paid commission, commission is our expense. So first effect on commission account and commission paid means cash goes out. So second effect on cash account. 10,000 deposited in a bank. So bank is become receiver. So first effect on bank account and whenever deposit in bank, so cash goes out. Second effect on cash account. 5,000 withdraw from bank. Whenever we withdraw from bank, cash comes in. So cash account effect and bank is giver. So bank account effect. Furniture purchased for 10,000. So here we purchase furniture, the furniture comes in. So furniture account. And whenever we purchase furniture, cash goes out. Cash goes out, cash account effect. Wages paid 100. Whenever we paid wages, wages is our expense. So wages account effect. And whenever we paid wages, cash goes out. Cash goes out. Second effect on cash account. Salary paid by check. So whenever we paid salary to employee by check, salary is our expense. So first effect on salary account and this amount paid by check. So bank is given. So second effect on bank account.
Okay, thank you very much.